which one is not in the syllabus this year. 3.4 exercise complete. We have done only principal value. So remember this thing beta. When we do the trigonometry second term beta. So second term में revision करेंगे तो मुझे वो वाला ही बताना बेटा. I'll discuss that 3.4 equation also better. This type is known as trigonometric equation, and that concept is used in 12th. That is the syllabus in class 12. But for 11th purpose, they have deleted this topic, so we'll discuss that also better at the time of revision of trigonometry. So I have already Sharma today, but first I'll revise what are the concepts in differentiation. The date is 7/2/22. Revision of chapter 3. Class. So what is the meaning of derivative, or what is the meaning of differentiation? So what answer you have to give whenever a person is asking what is the meaning? You have to always give this mathematical definition of differentiation: rate of change of one variable with respect to another variable. Right, this is the important thing which we have to, whenever if they are asking in an exam, define derivative, you have to write this, you will get full marks better. Right, कुछ अलग अलग भी बोलते हैं, but technical point of view से you have to give this answer better so that you can get full marks better. हाँ बेटा बोलो. पढ़ के बताना क्या लिखता है. सॉरी बेटा दोबारा बोलो. सर मैं कह रहा हूँ देख नहीं रहा है, पर पढ़ के बता दो क्या लिखा ऊपर. बेटा आप मैं पूछा आपने अटेंडेंस बेटा होगी थी. अरे अटेंडेंस होगी थी बेटा, हो चुकी बेटा, अटेंडेंस तो हो चुकी बेटा. ओके सर, 2 बार हो चुकी बेटा. शुरुआत में फर्स्ट और सेकंड पीरियड में होती जाती है. यस बेटा, सेकंड का आई थिंक सिद्धार्थ जैन इज आस्किंग समथिंग. सिद्धार्थ, यस. What the board? बोर्ड इज नॉट विजिबल. सर बोर्ड पे क्या लिखा है एक बार बोल दीजिए वो. अच्छा बोल दूं, ये वैसे विजिबल नहीं हो रहा क्या? मैं थोड़ा और बड़ा लिखता हूँ बेटा, रुको 1 मिनट, बोलता भी जा रहा हूँ वैसे मैं. आई हैव रिटन रिवीजन ऑफ चैप्टर 13, टॉपिक नेम इज डेरिवेटिव्स. Is this visible or not better? Derivatives. So visible. Visible? Okay. Now, I have given the definition of this. Rate of change of one variable with का short form W dot respect to another variable. Right beta? So I think jab we have done this topic in the class, I have given the example of this chalk. Right? So what is the rate of change of this chalk with respect to this one period? And one period का क्या slot है? 30 minutes, 1 hour. So after completing this period, what will be the size of this chalk? This will be reduced. तो इसका size change होगा. किसी में increase, जो normally इसके जितने भी examples हैं बेटा, उसमें reduce होता है, because the first formula, which the name I have given बेटा, power rule. This is the name I have given better, power rule. This is first formula, and power rules mean where we have to apply whenever we have variable raised to the power constant. Whenever we have variable raised to the power constant, we have to apply power rule, right? So d by dx of x raised to the power n. Now how to pronunciate this?
this representation, this notation, and this expression. How to read this better? This is derivative of x raised to the power n with respect to x. And what is this known as? Recall. What is this known as? Anyone? I have given the name of this. What is this? Online beta. Anyone who can give me the answer? हाँ बेटा बोलो. The differential operator. Yes, very good. This is known as differential operator beta. This is known as differential operator. Remember this thing beta. This terminology beta. These are differential operator. If somewhere I am writing d by dy of y raised to the power n, again this is known as differential operator. This is the machine which is differentiating this with respect to this variable, right? This is that machine beta. आप इसे machine बोल सकते हो आप, ठीक है? Now, what is the power rule? First formula of power rule is n x raised to the power n minus 1. This is the formula, and this is first formula beta, power rule. This is known as numerator form. You can write numerator form in this side. And the second formula I have given you, d by dx of 1 upon x raised to the power n. And directly you have to remember this formula so that. Very good. Right. Okay. This is known as denominator form. You can write in the side. This is numerator form. This is denominator form. Right. So this is the first formula, which is known as power rule. Power rule of first type, power rule of second type. So we have two types. Now I'm taking an example for both of this. Example beta. If we have to find out the derivative of x raised to the power 8, what will be the answer? Use it. 8x raised to the power 7. Right? Now if I am writing d by dx of 1 by x4 minus 4 by x5 minus 4 by x5. तो मैं ये चाहता हूं बेटा, जब भी किसी क्वेश्चन में आए तो ऐसा नहीं कि आप इस क्वेश्चन को देखो, sometimes some student do like this way बेटा, they write x raised to the power minus 4 first. Now applying this formula which is giving minus 4x raised to the power minus 5, then they are writing in the next step minus 4 upon x raised to the power 5. So we use three steps, 1, 2 and 3. But I want you to solve this directly बेटा, ठीक है ना? चाहे किसी भी क्वेश्चन में, चाहे 1 मार्क का है, चाहे 2 मार्क का, 3 मार्क का, 4 मार्क का, किसी में आप डायरेक्ट करोगे, ठीक है? इस तरीके से ध्यान रखना बेटा. So first is power rule बेटा. Now second is trigonometric. Second is trigonometric. ये बोर्ड थोड़ा सा गंदा है यार, काफी नहीं होता एक बार. पता नहीं. Okay. Now second category, that is known as trigonometric. Trigonometric beta, right? So trigonometric, this you have done in physics also. So I think cos x, d by dx of cos x minus sin x, d by dx of tan x secant square x. Right. Now number 4 is d by dx of cosecant x. D by dx of cosecant x. Anyone from online? cosec into minus cosec into cot x. Minus Minus cosecant into cot x. D by dx of secant x
It is sec x into tan x. sec x tan x. Well, d by dx of cot x beta minus Cos x Cos square. x square x. माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, राइट। ठीक है, देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, विच एवर फंक्शन स्टार्टेड विद सी इट्स डेरिवेटिव इज माइनस, so remember this thing in 12th also, because in that we will learn inverse trigonometry. This is pure trigonometry we have done in class 11 sorry, and in 12th we will learn inverse trigonometry. There also we have to learn this thing, whichever function is started with c, the derivative of that function will be in negative sign. तो c से जो फंक्शन स्टार्ट होता है उसका डेरिवेटिव माइनस होता है बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, नाउ दिस इज ट्रिग्नोमेट्री, शुड आई रब दिस बेटा? यस सर। Now third is, that name is exponential. Exponential. What does it mean exponential? Constant raised to the power variable. Constant raised to the power variable is known as exponential category. And you know that example of this is, if a is constant and variable x, a raised to the power x is in the category of exponential. Next is e raised to the power x. This is in the category of e raised to exponential. Next is any number raised to the power x, exponential, right? 3 raised to the power x, 4 raised to the power x, any number raised to the power x is comes in a exponential category. So we have two formulas in this case. One is d by dx of a raised to the power x, which is a raised to the power X x into a की power x. log a, right? Now second, d by dx of e raised to the power x is equal to ex only. क्या हो, दोबारा बोलो, क्या ex ही क्यों है बेटा? ये है मेन फॉर्मूला, तो यही है बेटा, because this is specific. So we have a property, see, log property, log m to the base m. Whenever angle and base are same, value of log is 1. Remember this thing. Whenever angle and base are same, whenever angle and base are same beta, value of log is 1, right? Now why this is, actually according to this its derivative should be this one, but we have not mentioned base here. So in calculus remember this thing beta, in calculus base of logarithmic function is always e, right? If it is not given, complete करो sentence को, if it is not given, right? अगर जैसे इस क्वेश्चन में मेरे को e नहीं दिया हुआ बेटा, कुछ नहीं लिखा ना बेस में, तो नहीं लिखा है इसका मतलब, on we are learning this in a topic calculus, so it is understood that here we have e, ठीक है, ये हमारे माइंड में फिट है, यहाँ पे भी e है बेटा, ठीक है। तो अब देखो, अब ये लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाओ, angle and base are same, so value of this log is what, 1. So we don't write this, so directly we put only derivative of e raised to the power x as e raised to the power x. Sorry, e is a term beta, exponential term. Mathematically I think around 14 or 15 years back beta, there is a chapter which gives you introduction of log and exponential. These are tool beta, कैलकुलेशन टूल्स है ये। इसकी एक लॉग टेबल होती है, ऐसी एक एक्सपोनेंशियल टेबल भी होती है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी होती है, साइन कोसेक की। साइन देखो 30 डिग्री आपको पता है, लेकिन व्हाट इज द साइन 30 डिग्री एंड 15 सेकंड वैल्यू? 30 डिग्री 15 मिनट एंड 20 सेकंड वैल्यू, ठीक है, ये सब वैल्यूज है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है। So these things we have done in our syllabus in CBSE, but nowadays this is not in your syllabus. ठीक है, तो ये सब चीजें हम तब कर सकते हैं जैसे नॉर्मल लाइफ चल रही है,
आज नॉर्मल बच्चों को पढ़ने का वैसे मन नहीं है सर, आप कोई नई चीज करा, तो ऐसे में क्या है, ये चीजें हम कर लेते हैं, आपके जेईई में बहुत यूजफुल हो जाते हैं बेटा। लेकिन ये थोड़ा सा पेंडेमिक में मैं खुद भी अपने आप को महसूस करता हूँ, मैंने वो वाली चीजें पढ़ाई नहीं आपको जो कई बार हम डिस्कस करके आपको फ्रूटफुल होती है आपके लिए, ठीक है। पर कोई बात नहीं, जैसी सिचुएशन वैसे काम करते हैं बेटा, ठीक है ना, इस तरीके से चलते हैं। क्लियर बेटा? लॉग इज अ टूल, मैथमेटिकल कैलकुलेशन टूल है बेटा ये। लेकिन एक और चीज बताता हूँ बेटा, दिस इज ऑल्सो नॉट गिविंग एग्जैक्ट आंसर, अप्रोक्सीमेट आंसर देता है ये भी, लेकिन बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है। आप शायद केमिस्ट्री या फिजिक्स में लॉगरिथमिक टेबल यूज करते हो। आर यू एबल टू सॉल्व लॉगरिथमिक टेबल? आर यू एबल टू सी लॉगरिथमिक टेबल प्रॉपरली बेटा? लॉगरिथमिक एंड एंटी लॉगरिथमिक, देखो जिसमें प्रॉब्लम है कभी भी बैठते हैं एक बार, और मुझे पूरी क्लास में एक बार मैसेज छोड़ना कि सिर्फ हमें ये लर्न करना है, सो दैट आई कैन कम विद द क्वेश्चंस आल्सो, सो दैट यू कैन लर्न बेटर थिंग। एंटी लॉग नहीं है, आपको जरूरत नहीं पड़ती एंटी लॉग, नहीं पड़ेगी बेटा। 11 12 में पूछना एक बार मैम से, केमिस्ट्री वाली मैम से, केमिस्ट्री या फिजिक्स में लॉग नहीं, केमिस्ट्री में, ठीक है। तो आप मुझे बोलोगे तो मैं कंटेंट के साथ आऊंगा, बिकॉज वी डोंट हैव कंटेंट इन मैथमेटिक्स बुक, बट वी हैव लर्न दिस थिंग विद 5 और 6 एक्सरसाइज लॉगरिथमिक चैप्टर। यानी जो बेस है उसका 11th में पढ़ा था, बेस से लेके जो उसकी हाईएस्ट पीक है लॉगरिथमिक का, वो सारा हमने एक ही बार में किया। सेम एक्सपोनेंशियल चैप्टर का नाम होता था लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज, ये चैप्टर होता था सर एक डाउट है। ठीक है। हाँ बेटा बोलो। सर जो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है उसमें है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल टू अनदर, पर ये एक्सपोनेंशियल में तो एक कांस्टेंट है, तो इस पर डेरिवेटिव कैसे काम कर रहा है? क्यों बेटा, फंक्शन है ना, मैं तो फंक्शन की बात कर रहा हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्यों ई रेज़ टू द पावर एक्स कांस्टेंट कहाँ है बताओ? ई रेज़ टू द पावर इज अ वेरिएबल। अगर मैं एक्स की जगह 1 पुट करता हूँ तो ई 1 आएगा, और मैं आपको बताता हूँ ई की वैल्यू होती है 2.57 समथिंग होती है आगे, मुझे 2 डिजिट तक तो याद है, सर तो फंक्शन का 2.571। डेरिवेटिव कर रहे हैं इसलिए वो डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं मतलब। हाँ जी, क्योंकि ये देखो, ये ओवरऑल जो फंक्शन दिस चेंजेस एज वी चेंज एक्स वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये एक्स की वैल्यू 1 है तो ये आंसर है इसका। अगर जैसे एक्स की वैल्यू 2 होगा तो इसकी वैल्यू दूसरी होगी, ये नहीं कि इसका स्क्वायर कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, दूसरी वैल्यू होगी। क्या बेटा? ओके सर आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब कांस्टेंट हो गया, अब कुछ एक आएगा। अब नेक्स्ट इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11 बेटा। तो नेक्स्ट इज प्रोडक्ट रूल। When we apply this beta, when 2 or more functions are in a multiplication form. So suppose if we have y is equal to fx into gx, so derivative of y is denoted by dy by dx is derivative of first into second function as it is, right? Plus now first as it is into derivative of second, dash is representing the differentiation part of that function, right? So first what we are doing, derivative of first function, this second is as it is, plus now this time function fx is as it is and we are taking derivative of second one. So this is the rule for when we have two function in multiplication. If we have 3 function in multiplication, same rule beta we have to apply. At a time we have to differentiate one only and rest as it is, right? So derivative, first derivative, second and third as it is, plus now first as it is, derivative of second and third as it is, plus first and second as it is and derivative of third, right? So this becomes the rule for 3 function in multiplication. If we have 4 function in multiplication, same logic you have to apply. At one time you have to differentiate 1 and rest 3 as it is, if we have 4 terms in a multiplication, right? This is product rule. कर दो बेटा, अब कर दो से। Yes, sir. Next is, okay beta, next is quotient rule beta.
Next is quotient rule. And where we have to apply quotient rule, beta? If we have fx upon gx, whenever we have rational expression, there we have to apply quotient rule, beta. Okay? So suppose we have y equal to fx upon gx, then what is the derivative of this? Directly square of the denominator. Yes. Minus fx as it is and g dash x. ठीक है, देखो ऐसे याद रखना, जब न्यूमरेटर में ऐसे रैशनल एक्सप्रेशन हो तो फर्स्ट में हमें ऊपर वाले को डेरिवेटिव करना, बस ऐसे याद रखना, बिकॉज यह नेगेटिव है बेटा, आगे पीछे कर दिया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, यहीं पे हम क्रॉस कर देंगे, जीरो आंसर मिलेगा, जबकि सिर्फ प्लस और माइनस का आपका चेंज आएगा बस। देखो अगर आपने ये पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया, तो माइनस का तो डिफरेंस है बस, लेकिन विल गिव यू जीरो मार्क बिकॉज यहीं पे जीरो क्रॉस कर देंगे, बिकॉज यू इनिशियली अप्लाइड द रॉन्ग रूल, बिकॉज रूल ये है बेटा, ठीक है, दिस यू हैव टू अप्लाई, राइट। सॉफ्टवेयर में प्रॉपर्टी लिखनी है क्या? नहीं, प्रॉपर्टी वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कहीं पे सीधे अप्लाई करना है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन जब आएंगे तो कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन पे, ठीक है। हम टेकिंग क्वेश्चन बेटा, अभी है मेरे पास टाइम, रुको अभी। नाउ सम जनरल रूल्स और देख लो बेटा एक बार। जनरल ये मैंने अपनी तरफ से डाला बेटा। इन दिस बेटा, इफ वी हैव टू डिफरेंशिएट डी बाई dx of k into fx, right? k is the any scalar, scalar multiplication rule भी बोलते हैं बेटा से, scalar, any scalar बेटा, constant मतलब की, ठीक है। this is also known as scalar multiplication। अभी आपने product rule पढ़ा ना, same way we write some in some book they have given this scalar multiplication rule। so what we need to do beta, that scalar part you need to keep as it is and the function you have to differentiate, right? Example of this is, suppose we have 5 cos x, this we have to differentiate beta। so see, this is 5 and this is fx, this is k, this is your fx, so we need to keep 5 as it is, ठीक है। cos का माइनस साइन होता है तो you write -5 sin x। लेकिन कुछ बच्चे देखो क्या करते हैं, दे अप्लाई प्रोडक्ट रूल हियर, आप प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करो, यही आंसर आएगा। देखो प्रोडक्ट रूल 5 डॉट cos x डेरिवेटिव प्लस cos x एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ 5, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ 5 इज 0 बिकॉज कांस्टेंट, डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म में 0, ये खत्म हो गया एंड सेम आंसर यू आर गेटिंग हियर -5 sin x, ठीक है ना। तो इतना लंबा टाइम नहीं लगाना किसी में भी, डायरेक्ट करो बेटा, ठीक है। और जनरल में आपके पास सेकंड आपका डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, यू नो दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। I have given you the definition of constant in terms of mathematics beta, can anyone please tell me what is constant beta? पहचानो, मैथमेटिक्स में कैसे कांस्टेंट बोलोगे, जो फिक्स है उसे कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोला, दोबारा बोलेंगे? real numbers, टर्म्स विदाउट वेरिएबल्स, टर्म्स विदाउट वेरिएबल। अब इसको बस मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो बेटा, एनी टर्म। हाँ बेटा कोई बोल रहा है, बोलो। The term, any term The independent. power of variable is 0. Very good, very good, very good. Term, this is mathematically we have to tell, term independent of any variable, this is known as constant beta। Independent means that term not even multiplied by any one number variable, sorry, and not divided by any variable। so because only this thing is known as term, right? if I am writing 5 plus x, so this is the combination of two, one constant, one variable,
But if I am writing this 5x, so this is always said that this is a variable because this is a single term now. Multiply and division is known as single term, right? And we are putting a plus and minus sign. It means this is the combination of two and more terms, right? So here this is a variable. Overall this is a function, but this is a combination of constant and a variable. But अगर overall कोई function पूछ रहा, this is a variable function. ठीक है? लेकिन if I am writing only 5, now this is constant. ठीक है? तो constant का derivative 0 होता है. So constant means a term independent of any variable. This you have to remember. ठीक है? और one more, this you use directly beta always. Otherwise your, well, this is d by dx of root x and its derivative is 1 by 2 root x. And I used to say this thing, always remember derivative of this way. This, what is the derivative of root? It is always 1 by 2 root. बस ऐसे याद रखो. माइनस नहीं होगा सर. ठीक है? Because क्या बेटा माइनस नहीं आएगा नहीं. देखो कुछ बच्चे इसको ऐसे करते हैं, इसको x की पावर हाफ लिखा, देन डिफरेंशिएट लगाया हाफ x हाफ, चले जाओगे 1 by 2, ये हो जाएगा x की पावर हाफ. Sorry, disconnect together beta. 1 second. Share. Share. राइट बेटा. तो ये रूट का डेरिवेटिव ऐसे याद रखना. ठीक है? चलो अब हम क्वेश्चन लेते हैं. फर्स्ट यू हैव टू रिवाइज कंप्लीट एनसीईआरटी बेटा. रिवीजन पर्पस से बोल रहा हूं. फर्स्ट यू हैव टू रिवाइज दी एनसीईआरटी and I'm taking some questions from R.D. Sharma book I have right now. So derivatives, 30th topic. Now suppose we have a question. Differentiate. Question will be differentiate. Question will be differentiate x ex with respect to x. This way you will get this question in your exam better. Differentiate, or they can write derivative of this with respect to x. Right? Achha, one more thing better. Suppose if someone is asking d by suppose karo derivative of sin x with respect to y. Yes, anyone beta? चलो ये वैसे नेक्स्ट ईयर का, ये तो नेक्स्ट ईयर ही डिस्कस करूंगा. ठीक है? नेक्स्ट ईयर करेंगे. 0 सर. हाँ, आप प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से 0 सही बोल रहे हो बेटा. बट सेकंड नेक्स्ट ईयर जब हम करेंगे तो हम विल लर्न सम cos x dx by dy. हाँ, अब ये भी सही बोला. ये आपको 12th का भी पता है इसका मतलब. गुड. मतलब जिसने कांस्टेंट बना के से 0 बोला, दैट इज आल्सो करेक्ट, बिकॉज इन प्रेजेंट सिचुएशन whatever the concept we have learned, according to that d by derivative of sin x with respect to y is 0, because we have learned
बेटा हाँ वही, अब चेन रूल हमारा नेक्स्ट सेशन में है, नेक्स्ट क्लास में है। So when we learn the chain rule, then according to that cos x into dx by dy, अभी बच्चे ने बोला है, ठीक है ना। So both the present situation 0 is correct answer, and someone is know the that next topic beta, according to that is also correct beta, ठीक है ना। So basically this concept is in class 12, so we learn this topic in class 12 only, right? Now we'll differentiate this beta. So what, how to present in CBSE examination, that you learn. First you have to write the given function, either fx equal to, or you can write y equal to x, whichever way you can present your function. This you have to present better. Don't write directly. I'm again saying that don't write directly, because this is a subjective paper and you will not get the marks for not presenting questions properly. Okay? Your presentation is important whenever we have subjective examination. Remember this thing. Now, f dash x. Which rule we have to apply here? Product rule. Okay? So that rule you have to mention here. X dash dot ex as it is. Minus plus sorry. X as it is derivative of ex. That is showing that we have to differentiate in. So what is the derivative of x? Derivative of x. Anyone? 1, correct. Dot e raised to the power x plus x as it is derivative of ex as it is. So that is ex. And now finally differentiation you have done. But always remember in calculus that wherever you find anything for simplification, we can do in the next chapter. Common, right? Yes. So simplified answer you have to write beta always. Right beta? Anji beta, someone is saying something online. Beta, your voice is not. Video pause हो रही है? Sir, lag हो रही है. No, sir, it is fine. It is fine. Okay. Sir, video देखो is बेटा fine, कई your बार क्या होता है आपके voice is lagging. voice is lagging. Okay. एक सेकंड सिग्नल देखता हूँ तो 1 second सिग्नल is proper. Okay. Sure बेटा तो net issue है. Should I repeat this again beta? This is the presentation beta. In first step you have to show which rule you are applying, right? This is the rule you applied, and this is the derivative, and the next step is simplification. Always remember calculus, in calculus you have to give the last calculated answer. This is the line I always use, because in class 12 out of 13 chapter 6 chapter belongs to calculus. In 12th class we have 13 chapter beta. Out of 13 we have 6 chapter belongs to calculus. तो देख लो आप पूरा ट्रेगो, पूरा डेरिवेटिव जो हम 11 में पढ़ेंगे पूरा आपका 12th में यूज होगा. And some part of conic is used in class 12. Some part of I think straight line is also used in that. ठीक है, इस तरीके से याद रखना. Is this clear बेटा? Now I'm taking quotient rule problem. देखो उसको कैसे करेंगे. Any question we have here? I'll take quotient rule problem. Okay. Question is same language they will write beta. Differentiate e raised to the power x upon x plus 1 plus sin x. 1 plus sin x. This is differentiate this with respect to x. So my first step to write is let fx equal to this. Right? Now derivative. Which rule we have to apply beta? Quotient rule. So that you have to present beta. That you have to present.
So in quotient rule, in first step we differentiate fx, numerator part beta. So write ex dash dot denominator as it is minus this time numerator as it is into 1 plus sin x dash and divided by 1 plus sin x whole square. ठीक है? See, you will get half mark for writing this step. ठीक है? अब आप जिस बच्चे को डेरिवेटिव के रूल याद नहीं है या मान लो फॉर्मूलाज याद नहीं है, अगर उस बच्चे ने ये भी लिख दिया तो दैट चाइल्ड विल गेट हाफ मार्क एट लीस्ट. ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस चीज का. So derivative of ex is ex as it is, and this is minus. Now this time ex as it is. Derivative of this is derivative of 1 is 0. Sin x derivative is cos x. Whole divided by 1 plus sin x whole square. Now what next step we can take beta here? Ex is common. So normally in ex problem beta, ex 99.9%, this will be constant in each and every question. Sin x minus cos x whole divided by 1 plus sin x whole square. This will be your final answer. ठीक है? सर तो नीचे अगर तो ये खोलने दो की नंबर जरूरत का नहीं है ना? नहीं, अगर आपको लगता है बेटा कि इसको खोलने पे कुछ ऐसा ही आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, तो खोल देना. ठीक है ना? अगर ऐसे कुछ रिलेटेड आ रहा है तो खोल के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. डिफरेंशिएटिंग लॉग को, लॉग एक्स का डेरिवेटिव. अच्छा, लॉग एक्स का मैंने डेरिवेटिव नहीं बताया ना आपको. लॉग भी कॉन्सेप्ट में है, मैं भूल गया बेटा. डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 by x होता है बेटा. रिमेंबर दिस थिंग, d by dx ऑफ log x इज इक्वल टू 1 by x होता है. मैं भूल गया बेटा, बिकॉज हमने जो जो कॉन्सेप्ट लिमिट में पढ़े हैं उनका डेरिवेटिव भी पढ़ना है. एक्सपोनेंशियल इज इन लिमिट एंड लॉगरिथमिक इज आल्सो इन लिमिट. तो डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1 by x होता है. ठीक है? और यहाँ पे मैं बोल रहा था, अगर आपको लगता है कि कहीं पे इसको सॉल्व करने पे ऊपर का कोई पार्ट कैंसिल हो रहा है तब सॉल्व करना, अदरवाइज छोड़ देना. ठीक है? एंड देखो, अगर ये 2 नंबर का है तो मार्किंग बताता हूं. दिस स्टेप यू विल गेट हाफ मार्क, राइट? एंड फॉर दिस स्टेप यू विल गेट 1 मार्क. ये चेन रूल का है बेटा. बट एक चेन रूल है बेटा, उनके में कराया होगा तो उन्होंने दे दिया है, बट हमने चेन रूल नहीं कराया तो विल नॉट गिव यू. बट दिस इज ए क्लास 12 क्वेश्चन बेटा. ठीक है? मैंने बेटा जो सीबीएसई की उसमें लिखा है ना, जो गाइडलाइंस आई है, मैंने सिर्फ वही टॉपिक की. अदरवाइज मैं वो टीचर हूं जो आपको सिलेबस से ज्यादा कराना चाहता हूँ, बट मैंने सिर्फ क्योंकि जो कंस्ट्रेंट था ना टाइम का भी, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा नहीं कराया बेटा. ठीक है? हाँ, पर ये भी सिलेबस में नहीं है बेटा, ये पुराना पेपर लिया आपने, इस सेशन का नहीं है ये. आप किसी का भी पूछ लो बेटा. दिस इज ऑफ लास्ट ईयर, बिकॉज लास्ट ईयर ये टॉपिक था कोरोना पीरियड में, बट दिस सेशन दे हैव चेंज्ड अगेन. They have reduced. So first principle is the proof of any derivative. Like if someone asks you, why is derivative of sin x is cos x? So you can apply that first principle. First principle is the conceptual method of differentiation. ठीक है ना? ये जो हमने पढ़े ये सारे डायरेक्ट फॉर्मूलाज पढ़े हम. ये बेटा, हाँ जी बेटा. इसका मतलब क्या हुआ? बोलो बोलो. जो आपने बोला ना कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x कैसे होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से बताओ. हाँ तो सर एक बताएंगे कैसे, मतलब समझ नहीं आया बेटा. कॉन्सेप्चुअल मेथड है बेटा, सिलेबस में नहीं है. आपको करना है तो बताओ, मैं नेक्स्ट क्लास में बता देता हूँ थोड़ा सा. बेटा देखो, अभी मैं सिर्फ वही चीज देना चाहता हूँ, सीबीएसई में है. अगर कभी हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए तो हम लोग वो डिस्कस कर सकते हैं, अगर आप कहो. हाँ सर, डिस्कस कर लेना वो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला. बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल, बल्कि मतलब बहुत सारी चीजें बेटा इसमें कि जो डिस्कस करनी चाहिए आप लोगों के साथ, जो आपके उसमें काम आएगी. लेकिन वो सारे आईआईटी जेईई वाले टीचर्स करेंगे अब आपके साथ मेहनत, हम नहीं कर सकते. इज दिस क्लियर बेटा? ठीक है? एक मैंने क्वोशिएंट रूल का लिया, एक प्रोडक्ट रूल का लिया, और मैं कोई
चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ, एक अच्छा सा क्वेश्चन मैंने अभी देखा था। वन क्वेश्चन, 1 minute। चलो मैं लेता हूँ, अपने यहाँ बनाता हूँ क्वेश्चन। सपोज क्वेश्चन इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर sin x अपॉन चलो log x ले लेते हैं, राइट। दिस इज द क्वेश्चन, डेरिवेटिव x स्क्वायर sin x अपॉन log x dx, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज माय क्वेश्चन बेटा। और ये एग्जाम में भी आ सकता है मान लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर sin x log x with respect to x means overall Can we this try it? function, क्वेश्चन ट्रू। करो 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 करो, क्वेश्चन रूल ही है वे। पहले तो आपको पहचानना ये क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस इज अ क्वेश्चन रूल प्रॉब्लम। तो राइट दिस इज fx is equal to x square sin x upon log x. Apply quotient rule steps f dash x. This says that derivative of numerator and denominator as it is minus numerator as it is into derivative of denominator whole divided by denominator square, right? Okay, now see here beta, if we have to differentiate, which rule we have to apply here? Which rule we have to apply? Product rule. So this is what? This is quotient cum product rule. When we have to find out the derivative of this, it means this is not direct differentiable. We have to apply a rule because two functions are in multiplication form. So we will use product rule. So now in this next step, we have to apply the rule of product rule. That is x square derivative dot sin x as it is plus x square as it is dot sin x derivative. This bracket is closed into log x as it is. This log x as it is minus again x square sin x as it is log x derivative whole divided by log x whole square. अब आपने प्रॉपर कंप्लीट रूल अप्लाई कर दिया। नाउ डिफरेंशिएट, so it is 2x sin x square derivative is 2x sin x as it is, x square as it is, derivative sin x is cos x, and this is multiplied with log x minus x square sin x into derivative log x is 1 by x whole upon log x whole square. So here this is simplifying or anything is no. Rest you have to multiply and write the answer better. 2x sin x log x, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो और किसी में कुछ और कॉमन नहीं आ रहा है, आएगा बेटा आएगा। आफ्टर दिस स्टेप मैंने आपको बोला है कि आप इसको you have to write your answer in the last simplified. देखो 2x sin x into log x plus x square cos x into log x minus x sin x whole upon log x whole square. Now next step is from first and last step beta something is common. देखो क्या कॉमन आ रहा है? x sin x। x sin x कॉमन आ रहा है? x नहीं, first and last beta x sin x is common. We have 2 log x minus 1 plus x square cos x log x whole upon log x whole square. Remember this thing beta. Again I am saying last simplified. Something is common between 2 or 3 terms. Take common. Rest you have to write this way. ठीक है बेटा? This way you have to कोई डिफरेंस क्या ही complete पड़ता your है, answer. आंसर तो सेम ही आएगा।
बेटा आंसर स्टेप सेम है, मैं सिर्फ आपको क्या बता रहा हूँ, देखो डिफरेंशिएशन तो आपने कर दिया, अब मैं अगला स्टेप क्यों लिख रहा हूँ, एक सेकंड, अगला स्टेप मैं क्यों लिख रहा हूँ, खत्म कर दो ये। बट सपोज इफ दे आर गिविंग दिस क्वेश्चन इन 2 मार्क्स 3 मार्क्स, so there is some steps required। देखो सीबीएसई कहता है कि मैंने फाइनल आंसर यहाँ कंप्लीट किया है, और सीबीएसई हमें भी वर्कशॉप देती है और वो ये बोलती है कि बच्चों को यहाँ तक बताए कि इस क्वेश्चन को इस वेटेज के लिए यहाँ तक सॉल्व करना है, तो दैट ओनली आई एम कन्वेइंग यू बेटर। रेस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन अगर मैं चेक करना चाहूँ कि आपको डेरिवेटिव आता नहीं आता, दैट यू नो। नाउ रेस्ट आई एम व्हाट आई एम चेकिंग, क्या ऑब्जर्व करना चाहता हूं बेटा मैं यहाँ पे, आई एम ऑब्जर्विंग ओनली योर अलजेब्रा पार्ट विच यू हैव डन इन 7th 8th क्लास बेटा, मैं साथ में वो भी चेक कर रहा हूँ। भाई मैथमेटिक्स का टीचर हूं, मुझे हर चीज ऑब्जर्व करनी है कि नई चीज सिखा रहा हूं तो वही सीखते हो या पिछला भी रिटेन है आपके पास, तो वही तो चेक कर रहा हूं बेटा बस में, ठीक है डन बेटा। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार डिफरेंशिएशन लूं एक बार और, या कोई और टॉपिक लूं, मुझे ये बताओ पहले आप, अभी डेरिवेटिव और लूं, चलो नेक्स्ट क्लास में एक और डेरिवेटिव की एक क्लास और लूंगा बेटा, ठीक है। इज दिस ओके बेटा, ऑनलाइन प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. वन मोर Yes, क्लास sir. फॉर डेरिवेटिव, ठीक है बेटा, ओके बेटा, ओके ओके सर, नाउ यू मे लीव बेटा, ओके बेटा, बाय थैंक यू बेटा, सर। वेलकम बेटा, वेलकम।